Hello guys out there, welcome back to my channel Sai Dental Vlogs, and I hope you are doing fine, and thank you for showing so much overwhelming response. A big salute to all my subscribers and my viewers. So I am Dr. Abhishek, and if you have not followed me on Instagram, please do follow me and DM me in Instagram in Sai Dental Vlogs. So today's topic will be how to increase your income in your dental clinic, how to get profit in your dental clinic so that you can run your family well, so that you can run your expenses well, so that you can buy new instruments. सबका मन होगा ना आप लोगों का आरवीजी खरीदने के लिए, या फिर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सपोज हीट एंड टच आप ऑब्जर्वेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं. कुछ भी चीज अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू नीड मनी फॉर दैट, राइट? That money cannot be made easily in dentistry, because dentistry means a lot of hard work. You have to give time to the patient, you have to give time to the clinic, you have to give time to yourself. That's what we are sacrificing so much, and the fruit is not coming to you, right? But there are certain ways, there is a certain protocol with which you can increase your income from your clinic. See, increase your income from your clinic, that doesn't mean that you overcharge the patient, right? Patient से ज्यादा चार्ज नहीं करना है, या फिर पेशेंट को ज्यादा फोर्स नहीं करना है किसी ट्रीटमेंट को करने के लिए. किसी गरीब पेशेंट को ऐसा नहीं बोलना है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा. मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ. So how can you increase your patient? So either your patient pays more, right? Or second thing, you reduce your quality of work and reduce your material, and so which is not possible, right? So you have to give a high quality work in good price, not less price I'm telling, but good price which is convenient for both the patient as well as you, right? So the first big mistake with what we do in our clinic is, हम लोग क्या करते हैं, we only solve the chief complaint of the patient, right? That is to be done 100%. वो तो करना ही चाहिए. पेशेंट आएगा, उसका चीफ कंप्लेंट आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर अब क्या करेंगे? आप डॉक्टर किस लिए बने? लेकिन सबसे पहले अगर आपने कोई पेशेंट को चीफ कंप्लेंट आपने किया, मतलब है पेशेंट का, तो सबसे पहले तो आप उस चीज का ट्रीटमेंट किए. अगर रूट कैनल करना है तो रूट कैनल किया है, रूट कैनल कीजिए. स्केलिंग करवाना है दांत में पेशेंट का, अगर स्केलिंग है, मैला है, तो यू हैव टू गेट इट क्लीन. टेल द पेशेंट टू गेट इट क्लीन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर डेंटल प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन द पेशेंट्स माउथ, which you are not telling to the patient. You have to tell each and every patient about even a small restoration which needs to be done in the patient. How will the patient know himself, right? The patient can't know himself, but the patient, see, if there is a small cavity in the patient's mouth, right? And for example I'm telling, तो आपने patient को बोला कि आप sir get a filling done, and if you don't do a filling at the right time, it has to go for root canal treatment, in which you have to spend around 5,000 to 7,000 rupees depending upon the crown and root canal, everything which is there. But patient will tell to you कि I am not having pain, why I need to do that? Then at that time you need to show the patient how is the caries looks like, how does it actually appears, how it can increase and go depth into the roots, and it can cause periapical abscess. So that you have to show. How will you show? You take a radiograph and show the patient, or buy an intraoral camera. It's only 6,000 to 7,000 rupees, and attach it to your laptop, and you can show the vision of the entire tooth in the screen. So I am telling you 100% patient will do the restoration which is required for him. So this way you need to motivate the patient, right? So buying an intraoral camera is nothing. It costs just you around 6,000 to 7,000 rupees, and everybody is having a laptop or a tab. So you can attach it and you can just show the patient कि this is the way you can do it. Plus, if you want to increase the footfall in your clinic, you have to be very much cordial with the patient. वो तो सब आप लोग हो ही. Never be rude with the patient. Patient will ask you many kind of questions. You have to answer them in a very judicial and very nice way. You have to clear the doubts of the patient. That is one thing. Then third thing is that whenever patient calls, he will make a call whenever you are outside your clinic. He will say, where are you available, what time I can come. So always एक छोटी सी डायरी अपने पॉकेट में रखिए, जिससे कि कोई भी पेशेंट का कॉल आए वो नंबर आप तुरंत नोट करिए और उस नंबर को अपने जाके क्लिनिक की डायरी में लिख दीजिए. एंड गिविंग अपॉइंटमेंट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द पेशेंट, राइट? अगर आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप संडे आ जाइए, तो Sunday patient may forget, but if you tell the patient that you have to come at a specific time, a specific date, if you write it in your diary as well and tell the patient you come in this time,
patient will 101% turn up in your clinic and you can do the treatment. When he comes to the clinic, greet him and say him thank you and tell him, okay, what treatment you need, you do the treatment according to the need of the patient, right? Plus, many people are not advertising about the dental clinic. Please do advertise. You are sitting in your dental clinic, you move outside your dental clinic little bit. Suppose you're going to have tea, tell them, sir, I am having a dental clinic. If any patient asks or inquires, please do send to my clinic. And whenever the patient refers, get a reference from him or her whom you have told, just give a thanks to him. He'll be highly obliged. So see, you have to do your own advertisement. What I feel, आप खुद का प्रचार अगर खुद नहीं कर रहे हो तो दूसरा कोई आगे थोड़ी ना करेगा आपका क्लिनिक का प्रचार. सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को करना चाहिए. प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि काफी बार क्या होता है कि हम पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आता है तो एक पीडो पेशेंट आया, आपने बस एक सिरप लिख दिया पेशेंट को, फ्लेक्सॉन सिरप लिख दिया और पेशेंट को भेज दिया बिना फीस लिए हुए. तो आपको ये चीज बंद करनी चाहिए. बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैं जानता हूं, कभी कभी पेशेंट को ऐसे ही छोड़ते हैं. तो मैं जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं. सोचिए आप क्लिनिक में पेशेंट नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, दिन का एक पेशेंट आ रहा है, ठीक है. दिन का एक पेशेंट भी आजकल आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपका दिन का एक पेशेंट भी आया, इट इज यू विल बी बिकम लाइक अ गुड डेंटिस्ट इन द फ्यू 3 years. मीन्स यू विल हैव अ गुड प्रैक्टिस. गुड डेंटिस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बाकी लोग खराब है, यू विल हैव अ गुड प्रैक्टिस, राइट. सो वन पेशेंट एवरी डे, even if you take 100 rupees, then you are at a loss of how much? 3,000 rupees in the entire month. Suppose your fees is 200 rupees, so you are at loss for 6,000. अगर आप पेशेंट से फीस नहीं लेंगे तो ऐसे काफी बार होता है कि पेशेंट से हम छोड़ देते हैं या फिर पुराना पेशेंट आता है तो उसको हम, you should take the fees if the patient is coming second time to you after 6 months. अच्छा, एक ही महीने में 2 बार आ गया तो you can leave the fees, but आपको फीस लेना जरूरी है. क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 5 पेशेंट्स एवरीडे आए तो दिन का 500 रुपए तो सिर्फ फीस में हो गया, प्लस पूरे महीने का आप हिसाब लगा के देखिए कि अगर आप फीस नहीं लेते तो कितना ज्यादा लॉस होता है. पूरे साल का करिएगा तो कितना ही ज्यादा हो जाएगा. तो फीस लेना बहुत जरूरी है. फीस आपको डिग्निफाई करता है. फीस इज योर राइट टू टेक एनी डॉक्टर्स कंसल्टेशन ओवर द फोन. नेवर डू इट. टेल द पेशेंट टू कम टू योर क्लिनिक. इफ ही वांट्स ही विल कम, इफ ही डजंट वांट ही वोंट कम. तो नेवर मिस द फीस फ्रॉम द पेशेंट एंड डू एडवर्टाइज. खुद से आप एडवर्टाइज करिए अपने क्लिनिक का. कहीं पे भी जाएं तो जरूर लोगों को बोलिए कि आई हैव अ डेंटल क्लिनिक एंड दिस एट दिस प्लेस, इफ यू वांट यू कैन कम. तो इसी तरीके से पेशेंट के साथ रेपो बढ़ाइए. पेशेंट इसी तरीके से बढ़ते हैं. ऐसा नहीं कि मैजिक हो जाए और एक ही रात में आपके पेशेंट बहुत ज्यादा पेशेंट आपके आ जाए. और जब भी पेशेंट आए उनको अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही तरीके से दीजिए. अगर आप अपॉइंटमेंट ठीक तरीके से नहीं देंगे तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा कब आना है. तो ही विल कम एट अ टाइम व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल और यू आर बिजी. तो उससे क्या होता है कि इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट, राइट. और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि सबसे पहले अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ऑप्शन देना आपका काम है, चूज करना पेशेंट का काम है. ऐसा नहीं कि पेशेंट मैं हमेशा ये बोलता हूं, हमेशा से ये बोलता आ रहा हूं कि पेशेंट आता है आपके पास, अगर आप हर एक ट्रीटमेंट पॉसिबल, गरीब हो या अमीर, सब कुछ बोलना है आपको. जैसे कि अगर आप पेशेंट आया और आपने एक पुअर पेशेंट आया और आपको उसने रूट कैनाल के बारे में आपने बताया ही नहीं, उसने आपने बोल दिया कि निकाल दो. भले ही पेशेंट ना कराए लेकिन उसके माइंड में एक इंफॉर्मेशन तो रही. पेशेंट के पास या साथ जो आदमी और इंसान आया उसको तो ये चीज इंफॉर्मेशन रही कि रूट कैनाल बोल के भी एक प्रोसीजर होता है जिसे दांत सेव किया जा सकता है, जिसमें 2500 to 3000 लगता है. भले ही वो ना कराए लेकिन वो किसी और को बोल सकता है कि हाँ एक और प्रोसीजर है. सपोज बंदा हो या बंदी है या फिर वो किसी दुकान में काम करता है एंड व्हेन हिज ओनर और सम रिलेटिव गेट सम पेन देन ही मे रिफर यू टू योर क्लिनिक. Then he will tell there is also a procedure apart from extraction about root canal. कुछ सर बोल रहे थे उससे दांत रख सकता है. तो you may get patients like these. ऐसे ही चेन बनता है पेशेंट का, राइट. तो you have to tell all. Recently मैंने एक पेशेंट का रूट कैनाल किया. He was very poor. I never imagined that he would have got a root canal done. I thought he has come for extraction. He told no, सर आप मेरे किसी दोस्त का किए थे रूट कैनाल, अब मेरा भी कर दीजिए. So he was just a चार्ट वाला. एंड कितनी इनकम होगी उनकी. तो ही ऑल्सो डिड अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट विद क्राउन्स. पीपल आर डूइंग बट यू हैव टू टेल. पीपल वांट टू सेव देयर टीथ. नोबडी वांट्स टू एक्सट्रैक्ट बट योर वे ऑफ टेलिंग शुड बी वेरी calm. You should tell the tooth will stay for another 10 years. It won't cause any kind of problems.
So my video will be about this today, and if you like my video, please give a thumbs up and do subscribe to my channel, and please make it 10,000 as soon as possible. Till then, take care, goodbye. And if you like my videos, please do share with your friends and with your groups also, so that this piece of information can reach everywhere. Take care, goodbye.